Hi everyone, let us continue with the 19th pauri of Japji Sahib. असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सर पार होए. Countless are the names and places where to dwell, countless words that have never been reached. To say countless is to burden the mind. असंख्य तेरे नाम हैं, स्थान हैं, असंख्य लोक हैं जो अगम्य हैं. असंख्य कहना भी सिर का भार बढ़ाना है. In this pauri, Nanak says that there are numerous names and numerous places, but the fact is that all names are coined by human mind. नानक असमंजस में कहते, किस नाम से पुकारूं तुम्हें? Which name I should recite that will reach you? There are countless kingdoms of God beyond our comprehension. फिर असंख्य कहने में भी क्या सार है? As you increase the load of words, it will only magnify the burden on mind. Because परमात्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. Whatever you call him, infinite, fathomless, makes no difference. Silence is the only way to regard him. परम मौन ही उसका संकेत है. शब्दों का जाल हमें ईश्वर से दूर करता चला जाता. To know everything is only to overload the mind. In knowing the one, all burdens drop. अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गा. अखरी लिखन बोलन वान, अखरा सर संजोग बखान. Through the letter comes the name and all the prayers. Through the letter is all knowledge and songs in his praise are made. Through the letter is all writing and speaking is possible, means languages are made. Word create the destiny written on man's forehead. अक्षर से नाम है, स्तुति है. अक्षर से ज्ञान और गुणगान है. अक्षर से लिखना और वाणी के बोल हैं. अक्षर द्वारा ही भाग्य के संयोग है. नानक says, अक्षर, the letter is his name. It's letter that can't be erased. अक्षर means ओंकार. Basically, एक ओंकार is the focal point of Japji Sahib. It is the pivot of philosophy of Guru Nanak. Onkar is the one resonance that vibrates and capable of bringing us close to him. Onkar is his name and alone is his prayer. God is not an emperor who needs praises to flatter. हम भला उसकी क्या प्रशंसा करेंगे? All prayers arise from man-made languages, but he is beyond any language. Silence is the language of God, or to be filled with ओंकार is the real prayer. ओंकार के करीब आ जाना स्वर्ग है, and to be one with the ओंकार is to realize salvation. जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे. जेता कीता तेता नाओ, विन नावे नाही को थाओ. You who causes this are not subject to any destiny. As you command, so be it. All his creations are his names,
Without your name no place exists. जो वह लिखता वह भाग्य के परे है। वह जैसा फरमाता वही हम पाते। जो कुछ भी उसकी रचना है उसका नाम है। उसके नाम बिना कोई स्थान नहीं। God has no destiny, no goals towards life. He is beyond all. Therefore, Hindus call it Leela, God's play. He plays like a child plays with toys. फूल खिलते हैं, चांद चमकता है, नदियाँ बहती हैं। कोई प्रयोजन नहीं, कोई स्पेसिफाइड मोटिव्स नहीं। It's just his Leela. He vibrates in every sound. All vibrations are form of the one. He is omnipresent. एक ही छिपा है अनेक में. Nanak is overflowing with wonder and filled with gratitude. यह अहोभाव ही सच्ची प्रार्थना है. कुदरत कमन कहा विचार, वारिय न जामा इक बार. जो तुध भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार. How can the power of the universe be contemplated? How much I offer myself could never be enough. Whatever pleases you is best for me. You are formless, the Almighty, who abides forever. कुदरत का विचार कैसे करूं? मैं तो तेरे ऊपर एक बार भी सदके होने के लायक नहीं. जो तुझे भाई वही शुभ है. तू सदा सलामत निरंकार. All activities are God's activity, and every activity has its base, a name, a word. Word does not only mean a letter as we understand it, but means word as a creative power or say Shakti. This is the harnessed atomic energy. यही परमात्मा है. हर ध्वनि में वही गूंज है और सब ध्वनियाँ ओंकार के ही रूप हैं. And ओंकार is the only way to find him. Thank you. That is all for today.